Hello guys, what's up? Am I live guys? Wait, let me check whether I'm live or not. Okay, it seems that I must be live. So, can you able to see me? Whether I'm live or not. Okay, that's nice. I'm live now. Okay, childrens, I welcome to all of you in this wonderful video tutorial, and in this video tutorial, I will be taking up your chapter number 2 of your class 11th chemistry. Right? I will be taking up the class 11th chapter. So your chapter name is atomic structure, right? So I will be completing its part 1. In this video tutorial I will be covering the part 1 only, and part 2 will be taken up next. Yes, so let's begin with the session. That is, chapter's name is atomic structure. What is the chapter name? Atomic structure. And this is a very wonderful chapter, and you will get the basic understanding of the chemistry. Fine. So this is being presented by me, that is Arun Thakur, and the PPT is being taken from the slide share. If you want, I will be giving you the link of this PPT. Fine. If you want. Fine, children. Okay. Right. So now let's begin. So welcome to our presentation. The chapter's name is Structure of an Atom. So this is the content list. We will be covering each and everything of this content. Firstly, I will be let's have an introduction. Then I will be explaining the content. Then first question arises that what is atom? So I will be taking up that thing. Then Thomson's model, discovery of protons, discovery of neutrons, Rutherford's model, Bohr's model, subparticles in atoms, valency, atomic number, mass number, isotopes, isobars, and all these things will be taken up. Okay, so you all must be knowing that if I'm talking about the introduction, that atoms were discovered by John Dalton, and he proposed the famous atomic theory in the year 1807, right? And then first question arises that what is atom? Okay, I'm live, I was checking. So, atom was discovered by John Dalton in the year 1807, and according to him, he has given the atom as the most this that atoms are the fundamental unit of matter. The existence of different kind of the matter is due to the atoms, right? So all the matter, you all know what is matter. What is matter? Anything that has mass and occupies some space, that is matter. So the existence of different kind of the matter is due to the different atoms which are constituting this matter. The major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties, and many scientists had worked over it and many models has been presented, and here we are going to learn about these different kind of the models. But first thing is that we should know what is the structure of the atom, or what kind of things are present inside that atom. So if I'm talking about
the discovery of two fundamental particles. What are these two fundamental particles? One is electron and another one is proton. So inside the atom, and this led to the failure of the aspect of Dalton's atomic theory. What does Dalton atomic theory says? It says that atoms are only the smallest particles in the nature, but the scientists like J.J. Thomson, Chadwick, as well as E. Goldstein had proved that no, Dalton is wrong, as the atoms also contain the further small particles which are electrons, protons, as well as neutrons. For explaining the arrangement of electrons and protons in atoms, many scientists has proposed the various atomic models. So hope that you have understood. So hope you are clear with the that what is atom. Atom is referring to the smallest, according to Dalton's theory I'm talking, it's the smallest particle, but it is not in actual. Matter is anything that takes some space, means it occupies some space and it has its own mass. So all matter is made up of atoms. Atoms are building blocks of matter, sort of like how brick are building the blocks of the house. So this is the timeline. Firstly, the Greek models in the time period of 1400 BC, which is presented by Democritus. Then Aristotle's four elements is being found between this time period. Then Dalton's model has been presented by him at the year 1803. Then Thomson's model, then Rutherford's model, then Bohr's model, and then wave model down theory. So we have to, in our class 11th, we have to study each and everything. हमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा from the very beginning. तो सबसे पहले हम Dalton, basically you have taken the overview of these models since your class 9th, बट बेसिक थिंग है आपकी इसमें. तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम इतना करेंगे, बोहर मॉडल को हम डिटेल में नहीं करेंगे, हम इसको ऊपर ऊपर से देखेंगे. बट द मॉडल्स लाइक डाल्टन्स, थॉमसन एंड रदरफोर्ड, वी विल गो इनटू डिटेल ऑफ दिस मॉडल्स, राइट. एंड वी विल बी डिस्कसिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स. इफ यू वांट, आई विल बी डिस्कसिंग the discovery of neutrons too. Clear? So hope that you have got the idea that we will be discussing the Dalton's model, then Thomson's model, Rutherford's model, then Bohr's model, and then wave model neutron. Means it is a new branch of chemistry which emerges out of the earth. A new thing has been launched. So if I'm talking about the atomic theory, which this theory is given by John Dalton, you can see his survival date. So what, according to this theory, that all metals are made up of the atoms. So atoms of an element are identical. Of course, if they must be identical, that's why they are forming a one particular kind of the element, right? So each element has different atoms. Each element have different atoms. That's why they are differing from each other. Atoms can engage in chemical reactions. Atoms can neither be created nor be destroyed. They must this is very important postulate of this theory, that atoms are indivisible, whereas the John J.J. Thomson has proved it wrong. Also Goldstein as well as Chadwick, because they had discovered, J.J. Thomson was the first person who had what he had done, he had found the this electrons. So first of all, I want to take up the discovery, then I will be taking up this model, right? If I'm talking about the discovery of electrons, then the electrons was discovered by J.J. Thomson at the end of 19th century during the studies of passage of light through gas at extremely low pressures. So what happens, children, for this purpose, in order to know that there is something electrons are there, means it was not intentionally done by Thomson,
but he was just doing the experiments because scientists are so much curious about their knowledge and about to get lot and lot more knowledge. So for that thing, he of course he was doing some experiment with the different gases, and he had observed what he had observed. Firstly, let me explain you the experiment. So the experiment is like that. The experiment is in its simplest form consists of a cylindrical hard glass like this is a cylindrical glass tube, or you can hard glass tube, and this is about 50 centimeter long. If I'm talking about it, this is 50 centimeter, right? After that, of course, it is being closed from both the sides, and this cylindrical tube is also known as discharge tube or Cook's tube. Now it is fitted with the two metallic electrodes. So these are my two metallic electrodes which are being fitted here. Now the tube is connected to a side tube through which it can be evacuated as a desired. So here there was one tube, means a vacuum type thing. In order to reduce the pressure, we can say the vacuum is being attached here. Clear? Vacuum pump is being attached here. So the discharge tube is filled with gas under the study, and two electrodes are connected to the source of high voltage. This is very high voltage, right? Hope you are getting, children, what I'm saying. Is it convenient to say in English or Hindi? Let me check whether I'm live or not. Give me a second. Discharge tube is filled with gas under the study, and two electrodes are connected to the source of high voltage. This is very high voltage, right? Hope you are getting, children, what I'm saying. Is it convenient to say in English or Hindi? Let me check whether I'm live or not. Give me a second. Discharge tube is filled with gas. Okay, I'm live. So here I was explaining you the Thomson's experiment. क्या किया उसने, कुछ नहीं, एक सिलेंड्रिकल सी ट्यूब ली 50 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, ये जो काफ़ी हार्ड ट्यूब थी, साथ में साथ इसमें उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए इसके अंदर. अब इन इलेक्ट्रोड्स को कर दिया ज्वाइन एक हाई वोल्टेज के साथ. ठीक है, बस इतना सा किया. अब इसने क्या किया, अब देखना जो इसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की इसने. व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन एनी गैस नॉर्मल एट नॉर्मल प्रेशर, नथिंग वाज अराउंड 5000 वोल्टेज 10,000 वोल्टेज. ठीक है, इसके बीच में वोल्टेज थी, और जो गैस थी that means the gas remains non-conductive, means the gas was not conducting at all. But जैसे ही as the pressure of the gas inside the tube is decreased and pumping out the gas with the vacuum pump, the pressure of the gas means that is decreased about 10 raised to power minus 2 atom. Then the gas becomes conductive and lights emitted by the reducible gas in this tube, and the color of the light has been formed. Right? So this is how he had done. Now he had do another thing. What he had done, he had take some magnet, or you can say that he has used horseshoe. You must be studying in your class 10. horseshoe का यूज किया, और जैसे ही horseshoe का यूज किया, ये जो थी उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होने लग गई, जो इस साइड जा रही थी रेस. ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? तो गाइस ऐसा हुआ कुछ, ये डिफ्लेक्ट हो गई पॉजिटिव की साइड. ठीक है, अब ये जो रेस थी कैथोड की साइड से आ रही थी, तो दैट्स व्हाई दिस आर नेम्ड एज कैथोड रेस, बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड. सही है, समझ आ गया? अब हमें एक्सपेरिमेंटली, अब देखो ये पॉजिटिव की साइड जा रही है, इस साइड डिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऑफ कोर्स सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, यू नो ना.
whereas different charges attract each other. तो बस यही कंसेप्ट यूज हो गया यहाँ पर, क्लियर? ठीक है, अब इन्होंने डिस्कवरी तो कर ली, अब आए इनके मॉडल की बात। अब गए कुछ साइंटिस्ट अब लोगों को जब ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, अब उनको लगा कि जे थॉमसन तो काफी इंटेलिजेंट हैं, तो आइए अब उनसे मॉडल के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने डाल्टन को गलत कर दिया। डाल्टन की काफी बड़ी थ्योरी थी, वो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू टेक सच अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड गिव हिज पोस्टुलेट्स रिगार्डिंग दिस एटम, राइट? तो थॉमसन ने सोचा इट अब ये कन्वेंशनली ऐसा है कि वो मे बी कुछ वाटरमेलन खा रहा होगा या पम्प पुडिंग खा रहा होगा, ठीक है? तो वो गए फिर उसने पम्प पुडिंग की तरफ देखा और उस बंदे की साइड भी देखा, थॉमसन ने। फिर थॉमसन ने सोचा हाँ ये तो पंप पुडिंग मॉडल है या ये तो वाटरमेलन मॉडल है, जस्ट लाइक द वे अगर आप वाटरमेलन को देखो तो उसके बीच में सीड्स होती हैं, ठीक है? तो इन सीड्स को बोल दिया उसने इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन्स। वेयरएज जो भी रेडिश पार्ट है उसको क्या बोल दिया थॉमसन ने? उसको बोल दिया जो बार है दैट इज माय न्यूट्रॉन्स, ठीक है? तो ये हुआ, तो इन्होंने ये मॉडल दिया, ठीक है? क्लियर है इतना? अब इसमें आपको दिख रहा है सब कुछ, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यू आर so intelligent in the opposite direction of the cathode rays, and he said these are my canal rays because they pass through the holes of the channels or the canals which are drilled through the electrodes, ठीक है? अब इसमें डिफरेंस क्या था? प्रोफिलेटेड कैथोड ट्यूब यूज हुई थी, ठीक है? क्या यूज हुई थी चिल्ड्रंस? एक प्रोफिलेटेड कैथोड रेस, ठीक है? और ये जो रेस थी ऑफ कोर्स ये एनोड की साइड से ओरिजिनेट हुई थी, सो दैट्स व्हाई दिस आर सेड टू बी पॉजिटिव रेस बिकॉज दे वर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेस। हेंस हमें डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन्स के बारे में भी ज्ञात हो गया, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, आप देख सकते हो। ये जो थी पॉपुलेटेड कैथोड था, ठीक है? मतलब ड्रिल्ड कैथोड था ये यहाँ पर, ठीक है? इस साइड पॉजिटिव। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस साइड हमारे कैथोड रेज जा रही है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन जा रहे हैं? एनोड रेज और कैनाल रेज, ठीक है? एंड कैनाल रेज को ही बोल देते हैं हम प्रोटॉन, ठीक है? इज इट क्लियर? यस और नो? So this was done by Goldstein. Hope you have clear with the two discoveries of electrons as well as of protons. क्लियर है ना? दोनों की डिस्कवरी काफी इजी है। Now let's discuss the discovery of Newton. So this was discovered by James Chadwick. He discovered the another subatomic particle which has no charge and nearly equal to that of mass of the proton. So it was eventually named as the neutron because neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen. In general, neutrons are represented by n. The mass of an atom is therefore given by the sum of mass of protons and the neutrons which is present inside the nucleus. Clear है? तो देखो अगर आप न्यूक्लियस में ध्यान से देखोगे तो कुछ आपको ऐसी चीजें ऑब्जर्व करने को मिलेगी एंड दिस थिंग्स आई से और आई नॉट से दिस इज एक्चुअली न्यूट्रॉन्स। क्लियर चिल्ड्रंस? होप यू आर गेटिंग? यस? आर यू गेटिंग और नॉट? Under this study, and two electrodes are connected to this source of
Okay, childrens, hope you are getting all the, or you are clearing with the concepts. So I was tracking that not even a single child has been joined with you, but soon, of course, this will remains always on the YouTube, so you can see in this video anytime. Yes. Okay. So let's further continue. इतना समझ आ गया क्या, किस किस डिस्कवरी, किस किस की डिस्कवरी के बारे में मैंने बात की है? सबसे पहले द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, देन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो थी हिस्ट्री थी, मे बी इन योर जेईई और जेडब्ल्यू और नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट इन सीबीएसई दिस इज नॉट जनरली आस्क्ड। ठीक है, ये क्लियर है? ये ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर है हाफ, बट हाफ में आपको मजा आएगा समझने में। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव अगेन टू माय वीडियो। ओके, 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 सो ठीक है, हम डिस्कवरी के बारे में बात कर ली, थॉमसन्स मॉडल के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रदरफोर्ड्स कोल्ड एक्सपेरिमेंट में। अब इसमें क्या होता है? इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे गोल्डस्टीन थे, we should pay a request to them, but still in order the purpose of understanding his concept we may use the word like, right? So in the year 908 the English physicist Ernest Rutherford was hard at work on an experiment that seemed to have little to do. Right? So have little to do with unraveling the mysteries of the atomic structure, because you know this Rutherford was the student of Thomson. Thomson's student is our this Rutherford. Rutherford experiment involves the firing of the stream of tiny, देखो ये पढ़ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बट मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुआ था। उसने क्या किया, गोल्ड फॉइल जीनी रिस्पेक्ट के साथ, ओके ये स्लाइड खाली है तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, ये स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। देखो जो हमारे गोल्ड फॉइल अर्नेस्ट गोल्डनस्टाइन थे, उन्होंने ली एक 1000 थिक एटम वाली गोल्ड फॉइल, क्या ली? 1000 थिक एटम वाली गोल्ड फॉइल। इसमें कितने एटम्स है? 1000। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग अल्फा रेज। बॉम्बार्डिंग मतलब एक टाइप से यहाँ पर इन्होंने अल्फा रे फेंकी इस 1000 थिक एटम्स वाली चीज में, गोल्ड फॉइल में। ठीक है, और आगे इन्होंने रख दिया कोई भी सॉलिड मटेरियल, या आप ले लो मिरर। ठीक है, तब जब इन्होंने नोटिस किया, इन्होंने क्या पाया कि कुछ जो रेस थी, कुछ किसी एंगल में डिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ बिल्कुल सीधी ही जाके सीधी आ रही थी, कुछ जो है बिल्कुल स्ट्रेट आके स्ट्रेट आ रही थी। तो इनको ये यहाँ से क्लैरिटी मिली कि काफ़ी सारी रेस जो हैं
वो उससे पास हो चुकी है, मतलब या इस सॉलिड में उनकी जो रिफ्लेक्शन थी वो दिख रही है। मे बी दिस ही हैज यूज्ड द मिरर, तो यहाँ पर दिख रही है। जब ये दिख रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज यहाँ ये जो जगह है ये खाली है, राइट, दिस स्पेसेस आर एम्प्टी। तो फ्रॉम दिस ही एक बार मैं आपको इसके दर्शन करवा देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये अल्फा रेस थी, मतलब जो हाइड्रोजन के ऊपर, जब हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं हम अल्फा रेस, ठीक है। जब वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, और ये अल्फा रेस आर वेरी अनस्टेबल, ठीक है। अब जैसे बॉम्बार्ड किया तो कुछ यहाँ से कुछ देखो, आप देख पा रहे हो मैक्सिमम ऑफ दीज रेस, देयर आर अराउंड 4 रेस आर बीइंग striking this solid portion, whereas only 2 are reflecting back. One is at some angle or maybe like that case. So from this he concluded that, see, एक बार ये डायग्राम भी देख लो, ये 9th क्लास का डायग्राम है, याद होगा अगर आपको तो, ठीक है। कुछ ऐसे इस एंगल में देखो, ये यहाँ से पास हो गई, ये किसी एंगल में डिफ्लेक्ट हो गई, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट चली गई, ये स्मॉल सी डिफ्लेक्शन। तो फ्रॉम ही हैड कंक्लूडेड दैट मैक्सिमम ऑफ द स्पेस in the atom is empty just at the center, means at the center the nucleus is found, hence so इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। So Rutherford concluded that an atom has small dense positively charged at the center that repelled his positive charge bullets. He called the center as the nucleus, ठीक है। एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो सेंटर था ये क्या था, पॉजिटिव था, वेयर जो अल्फा रेस थी वो भी पॉजिटिव थी, तो उन्होंने रिपेल किया था, तभी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। क्लियर, यस और नो, ठीक है। Tiny compared to the atom, so nucleus is very tiny, you all know. रदरफोर्ड ने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए, ध्यान रखना पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपको पोस्टुलेट्स एज वेल एज लिमिटेशंस याद होनी चाहिए, मतलब उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। रदरफोर्ड रीजनड दैट ऑल एटम्स positively charged particles were contained in the nucleus, the negatively charged particles were scattered outside the nucleus around the atom's edge. So इसको हम बोलते, we also said this model as planetary model of atom because it resembles that of solar system. Just like the way planets revolves around the sun, the electrons also revolves like the nucleus around the nucleus. So जिस टाइप से आपका ये न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस is we can consider this is the sun, and around the sun like device the planets revolve, similarly the electrons revolves around its nucleus. Clear? अब देखो क्या limitations आई, the model created by the Rutherford has still this serious discordance. According to the classic science, the electrons moving around the nucleus or planetary model of the atom is unstable, because planetary model of the atom the electrons should radiate energy and finally fall in the nucleus. अब देखो, अब कोई चीज फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तो मूव करेगा करेगा धीरे धीरे उसकी एनर्जी यूज होगी, जैसे अगर आप रनिंग करोगे अराउंड समथिंग तो आप भी थकोगे, और ये जो दूसरी बात ये है कि ये जो न्यूक्लियस है आप में कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन से मूव करता 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 धीरे धीरे एनर्जी को रेडिएट करता हुआ थक जाएगा और एक जाके न्यूक्लियस में एमर्ज हो जाएगा, मींस द एटम को डिस्ट्रॉय। बट इन जनरल ऐसा होता नहीं है, राइट, एलिमेंट्स हमें ऐसे बिल्कुल स्टेबल मिलते हैं। सो फ्रॉम this model seems to be little contradictory. Then comes our Bohr. Now he has given very interesting model, but for that you must be having knowledge of electromagnetic radiations. So in 1913 the Danish scientist Niels Bohr proposed an improvement in his model. He placed each electron in the specific energy level.
So, following Rutherford's planetary model of the atoms, it was realized that the attraction between the electrons and the protons should make the atom unstable. Bohr proposed a model in which the electron should occupy fixed orbits. They should occupy some fixed orbits as long as these orbits have the special discrete locations, right? So like this, the Bohr has given his model that nucleus is at the center, electrons here, orbits are means the बोहर ने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हो, मान लिया हमने बोहर का सॉरी रदरफोर्ड का ही मॉडल्स वो कर दिया, बट ऑफ कोर्स जो क्लासिक साइंस है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट करेंगे एनर्जी और वो एक टाइम में जाकर इलेक्ट्रॉन से क्लाइड हो जाएंगे, बट एक्चुअल होता नहीं है। तो बोहर ने बोला कि ऐसा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक स्पेशल path को फॉलो कर रही है, एंड व्हाट इज द नेम गिवन टू द स्पेशल पाथ, दैट इज ऑर्बिट। Remember this term, orbit. So around this special path, that is orbit, this electron revolves and जो पास नजदीक होगा उसकी एनर्जी होगी वो थोड़ी कम होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की, बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूट्रॉन्स सॉरी प्रोटॉन्स। क्लियर। तो एक बार देख लेते हैं। अब उसने और ऑर्बिट्स के अलग अलग नाम दिए, लाइक KLMN और 1 2 3, यू मे रेफर इट लाइक यू कैन यूज द नंबर्स और लाइक दिस। सो ये जो 1 है, 1 को बोल दिया K, वेयर सेंटर, सेंटर जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो सेंटर कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्लस न्यूट्रॉन्स, so these two things contain at the center, whereas first is my orbit, or I can say like K shell, L shell, M shell, N shell, and so on. So they also follows the 2n rule, right? Yes. जो फर्स्ट ऑर्बिट है that will store only two what, ये 2n स्क्वायर है, ध्यान से रखना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। whereas अब ये सेकंड आ गई, सेकंड क्या करेगी, अगर हम सेकंड को देखें तो ये बोलेगी n क्या है, कौन सी ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, तो इसका स्क्वायर कर दो, दिस वुड बी 8। तो ऐसे धीरे धीरे करके इनके लेवल इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स फिल्स द orbit closest to the nucleus. If I'm this is what, this is fluorine, so having 9 protons and 10 neutrons, जितने नंबर इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, रिमेंबर, न्यूट्रॉन्स इसमें 10 है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस न्यूट्रॉन, why this neutron is found, it does not used in the any kind of the reactions, but why this is present inside the atom, so this have a very great significance because it provides mass to the atom, ठीक है। तो ये रूल्स मैंने आपको बता दिया है, 2n स्क्वायर। क्लियर। key aspects of the Bohr's model, so electrons move around the nucleus at the stable orbits without emitting radiations, then electrons in one of these stable orbits has some definite energy. Energy is radiated only when electrons make transition from high energy orbit to low energy orbit. Of course, जब वो एक इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी ऑर्बिट में है वो नीचे आएगा, ऑफ कोर्स इट नीड टू रेडिएट द एनर्जी। So you are clear, I think, clear with the subparticles, that is electrons, protons as well as neutrons. Yes, is it, are you clear? Yes or no? You must be clear. So here significance is given that nucleus, that is the center of the atom,
ohms of protons as well as neutrons, and has what kind of charge? Positive. Perfect. If we're talking about the protons has relative mass 1u and has positive charge, determines the atomic number, and found inside the nucleus. Neutrons has no charge, 0, relative mass 1u, and found inside the nucleus, and this helps to increase the mass of the atom, or this constitutes the mass of the atom. Electrons are negatively charged, found outside the nucleus. According to Rutherford models, the electrons are around the nucleus, whereas according to the Bohr's model, the electrons are in the special energy level that is known as shells or orbits. That is KLMN, like 1, 2, 3, 4. So if I'm talking about how protons, neutrons, and electrons are related, remember that neutrons are not always equal to the electrons. In some cases, maybe they are different, especially in the case of ions. Number of protons equal to the atomic number, right? Number of protons plus number of neutrons gives us our mass number, and number of neutrons equal to the mass number, that is atomic number. Clear? So this is the symbolic representation of the atom. At the top we write mass number, and this is represented by A. Remember, अब ये नहीं होगा कि A से A start हो रहा है तो that would be your atomic number. No, you have to remember that this is opposite case. But A mass number is represented by, yes, A, whereas atomic number is represented by Z. Mass number is number of neutrons plus number of positively charged, that is protons, whereas atomic number is the number of protons or number of electrons. Remember, protons and electrons are not always equal. Okay, are you clear with this word valency? What is the valency? See, the outermost shell of an atom is known as valence shell. जो भी, for example, this is my hydrogen. Let's suppose this is my hydrogen having positive charge at the center. It contains only one electron. So this electron is known to be valence electron, and the number of electrons found on this outermost octet or outermost duplet or outermost shell, that thing would be known as valency. For example, if I'm talking about the valency of hydrogen is 1. The valency of an atom may be defined as the combining capacity of its atoms with atoms of the other elements to acquire the octet configuration. ये क्लियर है आपको? What is atomic number, mass number, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की. अब आइसोटॉप्स और आइसोबार्स और एक और होते हैं आइसोटोन्स, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स. देखो क्या होते हैं आपकी आइसोटॉप्स, क्या होते हैं आपने अभी पढ़े. क्या क्या पढ़ा आपने पढ़ा एटॉमिक नंबर, mass number. What is atomic number? Tell me in the comment section just now. Atomic number is, yes, can you tell me what is atomic number? Firstly, I want to check whether I am live or not. Give me a second.
Okay guys, I'm live. So children. Okay guys, I'm live. Okay. So my question was that what is atomic number? Atomic number is the number of electrons or the protons which is found in that atom. Whereas mass number is the sum of protons that is positively charged as well as the neutrons. ठीक है. अब आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स सेम. अब इनमें कुछ तो सेम होगा. सेम क्या होगा? सेम होगा एटॉमिक नंबर. सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट क्या होगा? मास नंबर. ठीक है, आप ये याद रखो. आइसो मतलब सेम और टॉप्स मतलब एटॉमिक नंबर. ठीक है. एप्लीकेशन. अच्छा, एक एग्जांपल दे देते हैं आपको. लाइक अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे कभी, तो हाइड्रोजन में जो चेंज आता है मास नंबर में, वो आता है 1, 2 और 3 में. अगर उसका मास नंबर 1 हो, दैट वुड बी नोन एज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. अगर 3 होंगे. क्लियर. अब ऐसे ही कार्बन का होता है. कार्बन C12, कार्बन C13, कार्बन C14. जो ये 14 वाला होता है दैट इज फाउंड इन आवर बॉडी और ये रेडियो एक्टिव होता है. जो पोस्टमार्टम होता है उसमें हम ये इसी कार्बन का यूज करते हैं कि हाँ, अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो बंदा कितना टाइम हुआ है बंदे को मरे हुए. क्लियर. देन कम्स माय एप्लीकेशंस ऑफ isotopes. An isotope of uranium is used as a fuel in the nuclear reactors. Isotopes of cobalt are used in the treatment of cancer. Isotopes of iodine are used in the treatment of goiter. ठीक है, क्लियर है. ओके, आइसोबार्स के बारे में बात करें. अब अगेन आइसो मतलब सेम. यू मस्ट बी क्लियर विद द ideologies of chemistry. आइसो मतलब सेम. एंड व्हाट डज बार मीन्स? कुछ तो सेम है इसमें. अब उसमें एटॉमिक नंबर सेम हो गया है, तो इसमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा. इट मस्ट बी डिफरेंट. हैविंग same mass number but different atomic number. Example, calcium, argon. They both have same mass number, that is of 14. So conclusion is given, but in conclusion I want to explain you one thing. I have talked about isotopes, isobars, but there is one more species which is being found, that is isotones. Isotones. Now what are these isotones? Isotones are the atoms which are having same number of neutrons. What is same? Number of neutrons is same, but they are having different mass number. This is same, whereas mass number is different. Clear? तो ये होते हैं आइसोटोन्स. फॉर एग्जाम्पल, सिलिकॉन and phosphorus are isotones of each other. Sulfur is also one of the isotone of these. Clear? These all three are isotones of each other. Clear? Yes or no? So Bohr was the next person who proposed that only the special discrete orbits allowed inside an atom while revolving the electrons does not radiate the energy. तो children, ये थे कुछ things जो आपको पता होनी चाहिए थी, और you can say this is a type of conclusion. So these are the references where I have taken this thing.
ये कुछ नॉलेज है, अगर आपने पढ़नी होगी यू मे टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट। नील बोहर के बारे में जरूर पढ़ना, बिकॉज नेक्स्ट सेशन में ही विल प्ले अ वेरी मेजर रोल. So this is something how the Bohr's model looks like. It's a 3D model. So I want you to try these questions, and I will be coming up with the part 2 now only, right? So till that, bye and stay tuned. So that's the end of your part 1. What we have discussed. So let me just tell you each and everything what we have discussed. We have discussed lot many things. Just give me a second. Okay, so firstly we have discussed the different kind of the discoveries, that is discovery of electrons, discovery of protons, and discovery of neutrons. We have go in detail of electron and proton, right? We have discussed then the models, different models presented by we have go in the detail of I think Thomson as well as Rutherford. Then the third thing we have done, I have make you clear with the thing like atomic number and mass number. I've cleared with you this thing. Then at fourth we have cleared the concept of isotopes, isobars, and isotones. क्लियर हो गया ना? उम्मीद है हो चुका है. फिर फिफ्थ पार्ट में हमने क्या किया? जस्ट वी हैव डन दिस मच. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आई वॉन्ट यू टू pre-read the chapter, right? Because this would help you a lot, right? So that's all from my side for this video. I think it's been a 48 hours to be live, 48 minutes to be live, and that's enough for part 1. So till that, bye and have a nice day, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much and have a nice day.